Assalamualaikum dear students. I hope you all are doing well. In our previous lecture, हमने डिस्कस किया था use of shall and should. And today we are going to complete our series of lectures on modal verbs. Today we'll talk about use of must and ought to. So let's delve into the use of must. Must इस्तेमाल किया जाता है when we have to talk about strong obligation or necessity. किसी बहुत अहम, बहुत ज़रूरी काम की बात करने के लिए. जब आपने authoritatively किसी को कोई बात कहनी हो, तो you can use must. For example, students must submit their assignments by the deadline. स्टूडेंट्स को डेडलाइन तक अपनी असाइनमेंट्स जरूर सबमिट करवानी है. Now let's talk about ought to. Ought to is used to describe advice, obligation or duty. ये उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब हम ऐसे काम को करने का कहें, ऐसी चीज के बारे में बात करें जो हमारे फराइज में शामिल है, जिसको करना हमारी मॉरल ड्यूटी है, हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है. फॉर एग्जाम्पल, वी ऑट टू सर्व आवर कंट्री. हमें अपने मुल्क की खिदमत करनी चाहिए. यू ऑट टू सर्व योर एल्डर्स. तुम्हें अपने बुजुर्गों की खिदमत करनी चाहिए. आई होप हमारे मॉडल वर्ब की सीरीज आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होगी. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आए तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. Like our videos and don't forget to subscribe Al-Rehman Academy. Thank you.